अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में लिपिड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लिपिड्स। The lipids or organic substance occur in plant and animal tissue belong to very heterogeneous group of substance। लिपिड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो पाए जाते हैं प्लांट में, टिश्यू में, एनिमल्स के टिश्यू में, और ये हेट्रोजीनियस का सब्सटेंस का ग्रुप है। लिपिड्स इंक्लूड फैट, ऑयल्स, वैक्सेस, steroid defined as substance have the following properties. They are insoluble in water but soluble in nonpolar solvent. Ether, chlorofluorone, and benzenes, the primary building block or fatty acid cholesterol. In most cases, they can be utilized by the living organisms. Most common lipids in fat in animal and plant. Fatty acid an organic acid with a long steroid hydrocarbon chain and even number of carbon atom। फैटी एसिड ऑर्गेनिक ग्रुप है जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन है और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पर है। ग्लिसरॉल, a sweet colorless yellowish steroid alcohol। ग्लिसरॉल जो है ये स्वीट है, कलरलेस, इनका कोई जायका नहीं है, अगर है भी तो मामूली येलो सा कलर है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स। Simple lipids naturally occur oil, fat, and wax, or collectively can known as simple lipids. Simple lipids are the esters of long-chain fatty acid with alcohol। इसके एक और जो इसे डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है: सिंपल लिपिड्स आर ester of fatty acid with various alcohol। They contain only fatty acid and alcohol all one। Esters. Ester is the chemical compound formed by the interactions of acid and alcohol। Fat and oils. These are ester of fatty acid with cholesterol। Fat is also called triglyceride। A fat is liquid state called oil। Waxes. These are ester of fatty acid with long chain monohydric alcohol। Compound or complex. These are the ester of cholesterol with two saturated and unsaturated fatty acid and some other compounds such as carbohydrates, amino acid, phosphate acid, and protein। These are can now as complex or conjugated lipids। इसमें कॉम्प्लेक्स में फिर फैटी एसिड का जिक्र किया गया है। फैटी एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड with a long saturated hydrocarbon chain and even number of carbon atoms। Lipids, also called glycoside lipids. These are contain sphingosine fatty acid and a
monosaturated and alcohol saturated unit. Sulfate lipids. These contain fatty acid, sugar, and a sulfate group. Phospholipid. These lipids contain phosphoric acid, fatty acid, nitrogen base, and alcohol. Lipoproteins. These are the saturate. These are the lipoproteins. These are the macromolecular complex of lipids with protein. Derived lipids. These lipids are obtained on hydrolyzed पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ को तोड़ना होता है of simple and complex lipids. These lipids contain glycerin and other alcohol. These are classified including steroid hormones, ketonic bodies, hydrocarbons, fats, acid, fatty alcohol. Function of lipids. Lipids are a good source of energy. एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स हैं. Lipids are essential for the absorption of soluble vitamin like vitamin A, D, E, and K. Body fats give anatomical stability of organ. Fat and good reserves in the body. Abdomen tissue is best suited purpose due to it very little water content. Lipids exert an insulating effect on the nervous tissue. Lipids are integral part of cell protoplasm and cell membrane. तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.